Good morning, students. I, JVN Preeti Singh, Faculty of Pharmaceutical Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University. Today, I will discuss about the topic equipment selection, purchase, specification, and maintenance. This is the part of quality assurance subject, and for the B Pharm 6th semester students. तो हम डिस्कस करते हैं इक्विपमेंट सिलेक्शन, परचेज, स्पेसिफिकेशन एंड मेंटेनेंस की. तो नाउ वी कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द इक्विपमेंट. Equipment may be defined as a physical entity which is used to carry out a general or specific activity in the pharmaceutical plant. It can be a single piece, for example, tablet, compression and weighing machine. Now we come to the equipment integrated. Equipment is an integrated system, that is a group of equipment come together to perform single activity. Example, water mineralization plant and air handling system. Equipment is generally one of the major input along with the people, facilities, materials and system. The quality of the manufactured products must depend on the suitability and level of the technology of the equipment used. It is the major requirement in the manufacture of the pharmaceutical product. The regulatory literature on GMP. What is GMP? Good manufacturing practices. The regulatory literature of the GMP is in various countries gives enough importance and provide guideline on the management of the equipment in pharmaceutical plants. We have a glance of international GMP literature. Following points coming up, those are first one is location and design, preventive and breakdown maintenance, construction, size and adaptation, cleaning and cross contamination, installation and calibration, qualification of validation. Abbreviations. Which type of abbreviations used in the pharmaceutical industry? First one is WHO, World Health Organization, US FDA, United States Food and Drug Administration, MHRA, Medicine and Health Care Products Regulatory Agencies, TGA, Therapeutic Goods Administration and MCC, Medicine Control Council. लाइफ स्टेजेस ऑफ द इक्विपमेंट. कौन सा ऐसा क्राइटेरिया होगा जिसके बिहाफ पे हम किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इक्विपमेंट का सिलेक्शन करते हैं? इक्विपमेंट मैनेजमेंट इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैज़ अ लाइफ साइकिल एंड द GMP रिक्वायरमेंट cover the life cycle of the equipment. It start with decision to purchase equipment and end with the scrapping or elimination of equipment from operation. Decision to purchase equipment is primarily need based. It consists of following stages. First one is decision to purchase equipment, and second one is purchase of equipment, and third one is qualifying, installing and validation equipment using the equipment. कुछ ऐसे स्टेजेस का हम ध्यान रखते हैं कि डिसीजन ऑफ द परचेज इक्विपमेंट. जिस टाइम पे हम किसी वेंडर से परचेज कर रहे होते हैं इक्विपमेंट के, उस टाइम पे हमें डिसाइड करना चाहिए कि ये प्रॉपर वैलिडेटेड और कैलिब्रेटेड है या फिर नहीं. परचेज ऑफ इक्विपमेंट एंड क्वालिफाइंग. Then we come to the selection of equipment, availability of the spare and servicing. The frequency and ease of maintenance will significantly impact on productivity and even quality. Equipment breakdown during processing could adversely affect quality. Including the maintenance evaluation should be cleanability of the equipment. This will be involved accessible criteria for the selection of the equipment. Now we come to the environmental issues are important constraints is the design of the equipment conducive to the application. Purchase specification. What is purchase specification of the equipment? Before we take decision to purchase an equipment, we need to look many aspects. This primarily help the user requirement specification for the equipment. Following questions may arise in relation to design, size, location, adaptation and construction of the equipment. Why the need arises for the purchase of equipment? Example, creation of new facilities, increasing capacity, adapting to new and improved technology.
which operations we want perform with the proposed equipment. Following factors are taken into the consideration while purchasing the materials. First one is right source, right quality, right quantity, right price, right time, and right mode of transportation. According to WHO guidelines, equipment must be located, designed, constructed, adapted, and maintained to suit the operation to be carried out. Equipment should be installed in such way to minimize any risk of error or of contamination. अकॉर्डिंग टू USFDA, अगर हम USFDA की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू USFDA, इक्विपमेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और होल्डिंग ऑफ ड्रग प्रोडक्ट शैल बी एप्रोप्रिएट डिज़ाइन, adequate size and suitability located facility operation for its intended use and for its cleaning and maintenance. MHRA TGA जो हमारी गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिस्क्रिप्टिव मैनर में अगर हम इक्विपमेंट की बात करें तो एनी सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन सच एज लुब्रिकेंट्स shall not come into contact with components, drug products, containers, closures, in-process materials of the drug products, so as to alter the safety, identity, strength and quality, purity of the drug is very important. Now we come to the equipment identification. How to identify the equipment? Identification is one of the 4 quality attributes in the quality of the pharmaceutical products. The identify of the equipment is also important along with the other identification required, just like product, room, people, system. Hence, to meet this GMP requirement, all equipment must be clearly identified. Now we come to the cleaning and maintenance. How to clean the equipment? Use clean equipment is one of the basic steps avoiding contamination and meeting the purity of the product. अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस रिकॉर्ड की. डिफरेंट टाइप्स के हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. फर्स्ट डिपार्टमेंट हमारा होता है इक्विपमेंट, आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड क्लीनिंग सॉफ्ट नंबर. रिकॉर्ड कैसे रखते हैं? अगर आपने कोई भी इक्विपमेंट परचेज़ किया, परचेज़ करने के बाद उसका आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन कैसे रखेंगे? तो डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट से आपने परचेज़ किया है, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से वो बनाया गया है एंड किस मंथ में आपने परचेज़ किया है और उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी क्या है, क्लीनिंग SOP नंबर क्या है एंड मेंटेनेंस SOP नंबर क्या है. Now we come to the atomic, mechanical and electronic equipment. Majority of the manufacturing and quality control equipment today fall in the category of AMEE. तो जो हमारे इक्विपमेंट सेलेक्शंस होते हैं, हम अगर इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल्स की सिलेक्शन की बात हम कर रहे थे, तो किस किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम किसी भी इक्विपमेंट का सिलेक्शन कर सकते हैं और उसको अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश कर सकते हैं. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. और नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस ऑफ स्टोर्स फॉर रॉ मटेरियल्स, कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको हम कैसे मेंटेन करेंगे एक स्टोर में, उसकी क्वालिटी को कैसे एश्योर करेंगे, उसकी क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करेंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.